Maliyalam Punjabi. So मुझे ना ऐसे बहुत टाइम से लग रहा था कि मैंने व्लॉग नहीं किया. मैंने आई थिंक 2 बैक टू बैक वीडियोज़ डाल दिए, सिट डाउन वीडियोज़ मेरे चैनल पे. एंड आई वॉज रियली फीलिंग लाइक अरे मुझे व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है. सो फाइनली आई एम व्लॉगिंग टुडे. दिस इज़ अ वेरी अनप्लान्ड व्लॉग. ऑल आई नो इज़ आई एम gonna react to my old Facebook pictures today on my vlog. So stick around for that. Also, I just woke up and I'm gonna be having my morning water. So yeah, I will catch you guys after I'm done having my morning water. Alright, I'm back and sorry for blinding you guys out, but please ignore this. मेरे एकदम बाजू में जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ मेरा विंडो है. So anyway, yeah, so like I was telling you guys, this vlog is really unplanned actually. Firstly क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है. Like we're not stepping out, we're not meeting people, we're not doing anything exciting. Usually मैं उन दिनों पे vlog करती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है या किसी से मिलना होता है या कुछ exciting करना होता है वो दिन पे. But of course अब ऐसा कुछ रहा नहीं. Like everyone's life is stuck right now and we're pretty much sitting at home doing nothing. And so मैं कब से सोच रही थी should I vlog, should I not vlog, I don't know, because there is no content to produce. Like what do I vlog about, you know. मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो मैं किस बारे में vlog बनाऊँ. and मैं कब से सोच रही थी मैं आज ये vlog बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मैं कैमरा उठाऊँ या नहीं उठाऊँ. but finally I'm doing this. So yeah, I'm gonna try my level best to make this vlog as entertaining as possible, but like no promises here, because honestly it's gonna be like a regular day. Like आप घर बैठ के लॉकडाउन में क्या करते हो, मेरी लाइफ भी फ़िलहाल वही है. So please do not expect any extraordinary things in today's vlog. वो कुछ नहीं हो सकता because yeah, I'm just helpless at this point. सो या एक्चुअली मुझे अभी अमेज़ॉन से मेरी एक डिलीवरी हुई है. सो आई एम गोना ओपन दैट. आई नो व्हाट्स इनसाइड. मैंने 3 चीज़ें मंगाई थी, उसमें से एक ही चीज़ अभी तक डिलीवर हुई है. ओके, तो मैंने ये मंगवाया है मिनिमलिस्ट का फेस सेरम. This has 10% niacinamide and zinc 1%. So this is good for curing your blemishes, your dark spots, your pigmentation, acne scars and all of that. फिलहाल मैं अपने प्लानर में आज का टू डू लिस्ट लिखूँगी. I have a couple of things to do today, like work wise, like actually घर का like I have to wash my hair and all of those things. So yeah, I like to write like the smallest things in my diary, because yeah, it just makes me feel good when I tick those things off at the end of the day or the next morning. So I'm gonna do this and then I'm gonna do my skincare and then we'll have some breakfast. मुझे ना एक्चुअली काफ़ी बोर हो रहा है एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग माइट इज़ वेल चेंज माई पॉलिश. इसको 4-5 दिन हो चुके हैं बट इट्स नॉट चिप्ड येट, बट आई स्टिल फील लाइक चेंजिंग माई पॉलिश. मैंने काफ़ी ऐसे ऑप्शंस निकाल के रखे हैं. लेट्स सी विच कलर आई पिक. मैंने ये सारी नेल पेंट्स ऐसे निकाल के रखी हैं. आई एम एक्चुअली प्रीटी कन्फ्यूज्ड बिटवीन दिस कलर. इट्स अ वेरी नाइस पेस्टल ब्लू कलर and I'm confused between these two basically. I am a white nail paint sort of a person, but मेरी white nail paint actually ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इन दोनों के बीच में काफ़ी confused हूँ. I think I'm gonna go with this shade because it matches my vibe. It's very close to white, but yeah, I think I'm gonna pick this. And ये मेरा nail hardener. Yay! Hi guys, so it's a little bit later. Actually it's 2 days later. I started filming on Monday and then उस दिन पे मेरा बिल्कुल मन नहीं किया. I was like, you know what, I'm gonna film the next day. I was feeling super lazy and then next day also I
didn't film. I was like, I'm just gonna chill. You know, it was one of those days for me where I just wanted to watch Netflix and chill in my bed. Like, I was in my bed watching Netflix for 2 days. Yeah, that's what I did. I'm planning to take it really easy. But anyway, today I am definitely going to vlog. I have a couple of exciting things to do today. The first one is, of course, I'm vlogging today. I also have to get my hair cut. Of course, I'm not going out for it. I'm gonna ask my mom to cut it for me. Like, it's grown really long and I need to chop it off at least a couple of inches, like a good chunk of it. I haven't had a haircut in like 2 years, which is crazy. The last time I had my haircut, which was 2 years ago, obviously I went like this short, and now in 2 years my hair has grown back super long, so I need to cut that. And I also need to declutter and like organize my wardrobe, which is gonna be like a little bit of a task, and I'm not up for it, honestly. Okay, so while I am here, let me just react to some of my Facebook pictures. Now, I am not active on my Facebook at all. The only social media platform I'm active on is Instagram. I have the phone right here. This is my dad's phone, and because of course I film from my phone. Now, I haven't looked at my pictures in a really long time, so this is gonna be scary but fun, of course. Okay, so the first picture that I've uploaded, which was also my profile picture, is this. It's not a picture of me, guys. It's a picture of this doll. This was in 2011, 26th June 2011. I'm assuming that's when I joined Facebook. And उस टाइम पे ना ऐसे ट्रेंड था ऐसे क्यूट डॉल्स का पिक्चर रखना एज योर प्रोफाइल फोटो. Anyway, that was stupid. Okay, so the first picture of me is this. We are in a restaurant and I had fringes at that point of time. This is 2011, 16th September, but I know ये मेरा birthday था and we had gone for a family dinner. Me, my parents and my mom's side of the family. That's what we used to do. हम सारे birthdays ऐसे एक साथ celebrate करते थे. And I think this was my 15th birthday, if I'm not. The next picture I have is also from the same year, and this is how the picture looks like. ये गणपति का टाइम था एंड मैं अपने मॉम डैड के साथ लोकल गणपतिस देखने गई थी. एंड ये वाला है RK स्टूडियो का गणपति. आई रिमेंबर दिस. This is in 2012. I remember this day very clearly. I don't know why have I put up this picture. This is what the picture looks like. We're sitting in a mall and I'm drinking water from a bottle. And ये मेरे 10th boards का last day था and all of my friends, we had gone to celebrate हमारा last day of board exams. And हम कौन से मॉल गए थे? हम वाशी के कोई मॉल में गए थे, इन ऑर्बिट मॉल. Like, this is like 9, probably 10 years ago, I don't know. Okay, so the next picture I have is this. हम गए थे सिलवासा एंड ये एक ट्री के अंदर एक हॉलो था, तो हम सारे वहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा रहे थे. दिस वाज माय स्कूल ट्रिप, 10th स्टैंडर्ड का ट्रिप था ये. दिस वाज द वर्स्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ. देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड बैड टू मी ऑन दैट ट्रिप. ये भी वहीं का पिक्चर है. ये रावण के 10 सर है और एक सर के पीछे मैं खड़ी हूँ. So funny. Why would I put these pictures online? The next picture is really not me. I feel like, who is this? This is what the picture looks like. I don't know, first of all, why am I doing that hand gesture? I still had fringes at this time. This was again in 2012. हम मेरे फैमिली के साथ मेरे यहाँ के लोकल जिमखाना में रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे. एंड दिस इज़ हाउ आई लुक्ड लाइक. आई स्टिल रिमेंबर दिस टॉप. इस टॉप पे ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये एक्चुअली एक ज़ीब्रा है. दिस सो ये मेरे क्लासेस के बाहर
हम जहाँ पे कुछ ऐसे नाश्ता वगैरह करते थे ना, उसी सोसाइटी के अंदर है। काफ़ी देर हो चुकी है एंड मी एंड माई फ्रेंड्स ही वाज जस्ट सिटिंग एंड गॉसिपिंग एंड ये उसी टाइम का पिक्चर है। दिस पिक्चर इज़ व्हेन आई हैड फर्स्ट गॉन टू गोवा विथ माई पेरेंट्स एंड हम जिस रिजॉर्ट में वहाँ ठहरे हुए थे ना, ये वहाँ पे मैंने खिंचाया है। आई हैव दिस fake frog in my hand and I really like this picture actually. This is the next one. It's from Goa again. Usi resort mein I was wearing shorts and everything. Wow. This was like my favorite picture for a really very long time. I had my new haircut. मैंने straightening करा रखी थी बालों में and this is the first time I'd gotten like really short hair. This was I think when I was in my 12th standard, my junior college. Also this was also my favorite picture back then for a very long time. It's the same day, वो शादी के दिन की ही picture है ये. The picture from 2013. हम गए हुए थे अमृतसर एंड हिमाचल. हम ये हिमाचल में है और where are we? Dharamshala. Yes, we are in Dharamshala. I really like this picture and like look at my green pants. And this is how I look like. I felt like this was the time I looked my best. Yeah, this was again in 2013. That's our setup ready. यहाँ पे मैं बैठूँगी. हमने न्यूज़पेपर ऐसे बिछा दिया नीचे. And yeah. My haircut is done and something funny just happened. मैंने और मेरी मॉम ने एक लेंथ डिसाइड की थी, ठीक है. हमने बोला था that we're not gonna go that short. मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल भी किया. लॉट ऑफ पीपल सेड प्लीज़ डोंट गो शॉर्ट, कीप द लेंथ. एंड मैंने और मेरी मॉम ने एक लेंथ डिसाइड की थी एंड उनको आई थिंक समझ में नहीं आया बिकॉज शी वॉज ऑल्सो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, बट उनको एक्चुअली लेंथ पीछे करके ना ऐसे समझ में नहीं आया. इफ़ यू सी द क्लिप, उन्होंने पीछे से काटे हैं. उनसे इतने छोटे हो गए मेरे बाल. कल से मम्मी का दिमाग खा रही हूँ. मम्मी मुझे बाल छोटे करने हैं. एंड देन later on when I did the Instagram poll, everyone said don't cut the length, you know. And my mom is also like तेरे पे लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, you know, because I have a big face so it covers up my face and everything. एंड मम्मी इज़ लाइक तूने तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब करके रखा है. आई मीन इट्स ओके, बाल ही हैं, बढ़ जाएंगे 2-3 महीनों में. मेरे माई हेयर ग्रोथ इज़ रियली फास्ट. सो ये आई थिंक 3-4 महीने मैक्स माई हेयर विल बी लाइक बैक टू वेयर इट वॉज. लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट ऑन मी. सो आई एम गोना एंड द व्लॉग राइट हियर. आई रियली होप you guys enjoyed watching the vlog. Also let me know, did you actually like the intro of this video? It took me 2 hours to make it, by the way. And let me know if you liked my haircut. I mean, I don't know, I've got mixed feelings about this. I really didn't want to go this short, but anyway, I think I'm gonna like, it's gonna grow on me. So yeah, also if you guys are thinking कि मैंने बोला था कि मैं अपना wardrobe भी declutter करने वाली हूँ, and why didn't I do that? That's because we were really tired and we didn't wanna exert too much. Also, if you see that the background has changed and I'm all dressed up and everything, that's because I'm at my dadi's place. So yeah, don't worry, my dadi's place is just like 2 minutes away from my house, so it's not that big of a deal and we've taken all the precautions. So yeah, that's it. That was a very big outro, but anyway, I really hope you guys enjoyed watching this vlog. I tried to make it as fun as possible for you guys. And yeah, I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care.